क्योंकि कितना भी हम हट्टे कट्टे और स्वस्थ हैं, अगर हमको खाद्य पदार्थ अच्छे न मिले या अच्छे खाद्य पदार्थों के भी प्रति हम सुरक्षा के भाव न रखा, तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है। इस क्रम में आज हमारी वेबिनार के प्लेटफॉर्म को जो लोग डिग्निफाइड करने आए हैं, हम उनका विधिवत वेलकम करना चाहते हैं। हमारे पास आज सबसे पहले डॉक्टर सुदेव मंडल जी हैं, जो कि नेशनल हेड टेस्टिंग सर्विसेज IR क्लास सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से पधारते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के क्रम में आज हमको और जो ज्ञान देने आ रहे हैं वो है हमारे मिस्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। वो अगेन प्रिंसिपल असेसर हैं और फूड स्कीम मैनेजर हायर क्लास के मामले में, और इनका भी हुई है सिस्टम एंड सॉल्यूशंस पर प्राइवेट लिमिटेड। आप भी मुंबई से पधारते हैं। साथ ही डॉक्टर नवीन कुमार हमारे गर्ग साहब जो हैं वो टेक्निकल हेड हैं, और इसी के विशेष रूप से जब तक एसेसर नहीं होंगे तो खाद्य क्या बना और क्या हम खाने जा रहे हैं, क्या हम पब्लिक को सप्लाई देने जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो उस कड़ी को पूरा करने के लिए गर्ग साहब हमारे साथ होंगे। और साथ के साथ ही एक हमारे काय चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर ऋषभ बोरा जी हैं। आप लेक्चरर हैं काय चिकित्सा में, और BM मेहता आयुर्वेदिक कॉलेज में विशेष रूप से आपका इस समय अध्यापन का काम चलता है, जो हमारी विद्यापीठ है अनंतपुर में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इन हमारे चारों गेस्ट स्पीकर, जो कि डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट स्पीकर्स हैं, अपनी फील्ड के न केवल एक्सपर्ट हैं बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा हैं कि हम उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है। और साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म जो आज जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी हमारे आ गए हैं। हमारे पास प्रोफेसर आदरणीय गुरु जी LK द्विवेदी जी आ गए हैं, और नितिन उर्मलिया साहब के साथ में हैं। आप सबका स्वागत है। और वो लोग जो हमारे यूट्यूब पर डायरेक्ट उसको विजिट करेंगे, उनका भी स्वागत है। और जो हमारे आर्काइव विजिट करेंगे, उनका स्वागत है। संदर्भ में आज के इस टॉपिक के प्रसंग में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि खाद्य पदार्थ बहुत अच्छे होते हैं, वो गुणवत्ता से पूर्ण है, उनकी क्वालिटी मेंटेन्ड है, कितनी क्वांटिटी में हमें खाना है वो भी ठीक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के नियम, राइट फ्रॉम द सीड्स टू द कुक्ड मटेरियल, बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत बड़ी जर्नी, बहुत बड़ी यात्रा है। वहां से हम खाद्य का कैसे सुरक्षा करें, सीड लेवल पर प्रसंस्करण में कैसे सुरक्षा करें, पैकेजिंग, फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अगर पैकेट फुल है, हालांकि हम लोग उसको बढ़ावा नहीं देते, बट स्टिल आज के जमाने में जितने भी जोमेटो स्विगी क्या क्या नहीं भेज रहे हैं, तो टोटल खाद्य पदार्थ, हम तो समझते हैं जल भी इसमें आता है आजकल, उसकी भी एक्सपायरी डाली जाती है बॉटल पर, क्योंकि प्लास्टिक में कंटेनर में पानी वैसे ही असुरक्षित मानते हैं। कितना भी बढ़िया पेयजल है, जो पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, अगर वो प्लास्टिक कंटेंट भी अगर सामने आ गया तो सीधी सी बात है उसमें वो गुणवत्ता नहीं रहती जो हमारे पास बेसिक होती है, जो रनिंग वाटर होती है। तो आज खाद्य सुरक्षा के सारे नियमों की जानकारी और उससे हम अपना बचाव कैसे करें, ये सब ज्ञान हमें आज अपने गेस्ट स्पीकर से प्राप्त होने जा रहा है। तो इसी उनके प्रारंभिक स्वागत के साथ साथ और आज के विषय वस्तु पर चर्चा करते हुए हम पुनः प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को आगे की कार्रवाई को संचालन के लिए माइक को वापस करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नवीन कुमार गर्ग का आह्वान करता हूं कि वो अपने सीनियर्स का परिचय दें तो बड़ा उचित रहेगा। डॉक्टर नवीन कुमार गर्ग, आर यू अवेलेबल? एम आई ऑडिबल टू यू? नवीन कुमार गर्ग जी, यस। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आप तो आयुर्वेद आयुष समृद्धि के कर्णधार है ही, तो मैं इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता था कि आप अपने सीनियर्स को इंट्रोड्यूस कराएं, तो बहुत अच्छा रहे। वेलकम। सभी को सर्वप्रथम जो है पवन शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में ये अपॉर्चुनिटी हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिली है। तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देते हुए मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे पहले जो मेरे सीनियर हैं या रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं या गुरुवर हैं, सतीश कुमार गुप्ता सर हैं। उन्हीं की बदौलत जो है मैं इस ऑडिटिंग फील्ड में हूँ
और ऑडिटिंग कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है। तो वो जो है पूरा करीबन 15 से 20 साल इसी फील्ड में असेसर हैं, और पूरे देश में और विदेशों में भी फूड सेफ्टी के माध्यम से वो ऑडिटिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की संस्था FSSAI के साथ भी कोलैबोरेट होकर वो ऑडिट करते हैं, और फूड सेफ्टी के मानकों पर खरा उतरने के लिए खाद्य पदार्थों में की गुणवत्ता के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है पूरी तरीके से समर्पित किया हुआ है, जितना मुझे मालूम है। और उन्हीं के सानिध्य में आज जो है BIS में भी, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उस प्लेटफॉर्म पर भी सर ने आज अपना नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर किया है। तो मैं जो है उनको, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ के साथ हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर सुदेव मंडल जी हैं, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारी IR क्लास की है, उसके नेशनल हेड हैं। और फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनकी टेस्टिंग का और उनका रिसर्च का प्रावधान और उनका व्याख्यान काफी लाभान्वित करेगा। उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूँ। और अभी मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा पवन शर्मा सर से कि वो जो है मंच संचालन को आगे प्रगति देते हुए, और हमारे सीनियर्स और हमारे जो गाइड्स हैं उनको निवेदित करते हुए इस प्रोग्राम को आगे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नवीन, थैंक यू वेरी मच। मैं अब सर्वप्रथम डॉक्टर सुदेव मंडल जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य के लिए। यह यूट्यूब पर लाइव है, लिंक आपको अभी भेज दी जाएगी। आप जितना चाहें यूट्यूब पर सर्कुलेट करें, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ने से हम लोग जूम बॉम्बार्डिंग के शिकार हुए थे 2 बार, तो हम बड़े रिस्ट्रिक्टेड लोगों को डायरेक्ट बुलाते हैं। आदरणीय डॉक्टर सुदेव मंडल जी। Yes. Namaskar, sir. Thank you very much for giving me the opportunity to be with you, all of you. You are very distinguished person in that field of Ayurveda, and particularly the organization IRES is all of you that mean very distinguished person. And in front of you, I will share my knowledge regarding that food safety. You know that I'm very much pleased to be here. And just I want to start. Before that, I want to know, can I share my screen? Is there option? Sure. Yeah, just yes, I got it. So, is it visible now? Yes, it is visible now. Okay. And also, I thanks Dr. Naveen, my colleague, as well as Satish ji, my senior. So all we are here for the great day. I know that World Food Safety Day. It was started in 2019 by FAO and United Nations, particularly for that, for the welfare of the consumer, for the safety, quality, and protecting the consumer health, as well as the international trade, fair international trade. For that novel cause, it was formulated because food is the most essential thing in our life. What we do, what we are, it is only what we intake. What is we take food, it reflects our health, our action, our karma, सब कुछ होता है food से ही. So food is the most important thing in our life.
apart from our clothings and our houses. That is the basic thing. And this year, theme of that food safety day is food standard save lives. मतलब हमारा जो standards है, each year some themes are there. So as IR class, you know that we are part of that TIC, Testing, Inspection and Certification Global Company. And we, for certification, Satish sir will tell you the part of the certification part. I will tell you that what are the contaminants, what are the food safety का क्या है, contaminants है, जो nutritional parameter क्या है, that I will highlight that part, and later on Satish sir will explain the other part, other standards. So it is very significant that for us also, for IR class also, that standard. So when we are procuring any kind of food from the market, that we check the label, we check that what is the expiry date, what it contains, what is the nutritional parameter. So standard set all these things. Previously, suppose before 20 to 25 years, हम कोई मटेरियल लेते तो ये सब चेक नहीं करते थे. बट अभी क्या है, नाउ we are aware about it, because that food safety day is primary objective is the awareness to the consumer. हरिओम, When there is a awareness. 9:30 पे 10 मिनट को फ्री है क्या? 9:30. आज विश्व पोहा दिवस है. मैं नए दिन खोज कर निकालता हूँ, तब पोहा के बारे में आपसे अच्छा कौन बोल सकता है? Sorry sir, should I continue? केवल एक्सटेम्पो कैसे बनता है, रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए. नो साइंटिफिक, ओनली कुकिंग. क्योंकि आप गुजरात से हो जाएंगे, मैडम वाइकर महाराष्ट्र से हो जाएंगे, तो दोनों. Please continue. Yeah. So that is the primary objective of that food safety day of this year. So before हम लोग food safety के लिए जो हम लोग जो बात करते हैं, तो we need to know what is the source of that contaminants or unsafe food का क्या प्रॉब्लम कहाँ से आता है, that we need to understand first. तो हम लोग को पता चलेगा क्या है, what is the reason for unsafe food. तो that now I will discuss. You know that India में जितना growing population हो रहा है, अभी जितना population बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो मिडिल क्लास population बढ़ रहा है, तो फूड के लिए बहुत डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड हो रहा है. जैसे कि हमारा फूड हैबिट भी चेंज हो रहा है, तो पैकेज फूड ज्यादा आ रहा है. तो अभी क्या है, इसके लिए हमारा आउट ऑफ 10% 1% फूड बॉर्न डिजीज से अफेक्टेड है. तो इट्स ए ह्यूज थिंग दैट मीन आउट ऑफ 10% 1% इज द विक्टिम ऑफ द फूड बॉर्न diseases. So it is very important the awareness, otherwise it will increase more. So government has set some policies and practices to ensure that food is safe. So standards have been established for that reason. And for that food safety risk, we need to understand the whole food safety chain. Suppose एक फूड जब बनता है, when in agriculture field में जब फार्म में जब फूड बनता है, तो कंटामिनेंट्स जो है फूड में, सपोज हेवी मेटल है, पेस्टिसाइड है और माइकोटॉक्सिन है, जो भी है, तो वहीं पे शुरू होता है. when एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड देना पड़ता है फॉर मोर प्रोडक्शन, फार्मर यूजेस मोर पेस्टिसाइड्स, एंड ग्राउंड वाटर में जो कंटामिनेंट्स ग्राउंड वाटर यूज करने से हेवी मेटल कंटामिनेशन आ जाता है. तो फास्ट फार्म में ही इसको शुरू होता है. दैट इज द रीजन.
स्टोरेज में भी when we are storing foods, moisture, mold, पेस्ट इसमें ऐड हो जाता है. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सपोज जो फूड से हम फार्मर का जगह से जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो ट्रांजिट होता है, दैट टाइम ऑल्सो ड्यू टू हीट और वाइब्रेशन डैमेज होता है. मॉइस्चर भी ऐड होता है, साथ साथ क्रॉस कंटामिनेशन भी होता है. सपोज वेज नॉन वेज डिफरेंट फूड जब एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है, देन कंटामिनेशन हो जाता है फूड में. Again, during the processing in the food plants, manufacturing plants, due to handling, poor handling, due to contamination हो जाता है, cross contamination हो जाता है, even damage भी होता है. And when in the market also, due to that poor control on this thing, that जो standard है, pathogens and contaminants वहाँ पे add हो जाता है. And finally, when we are using food, that mean in at home or hotel restaurant, they are also due to cross contamination or due to poor preservation, और उसका सेल्फ लाइफ निकाल जाता है. तो ड्यू टू दैट रीजन वहाँ पे भी अनसेफ फूड बन जाता है. So we know that different kind of food category wise are there. In terms of standards, we can segregate the entire food into different categories, like oils, grain cereals, bakery, AYUSH products, fish, meat, that is non-veg products, milk and dairy products, tea, alcoholic, non-alcoholic beverages. So these are the different categorized products, and as per that Food Safety Authority of India, these are the categorized have been set up. And for that different category having the different test parameter for the quality assessment of your food, is it have nutrition value proper, and if is there any contaminants or microbiological contaminants are there. So एक तो होता है फूड का जो अनसेफ फूड, बट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज न्यूट्रिशन. फूड न्यूट्रिशन क्या होता है? मेनली इन साइंटिफिक टर्म्स जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उसमें आप टेस्ट करना पड़ता है. तो उसमें मेन पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड एनर्जी. तो आप कभी भी कोई भी पैकेट आप देखोगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू आप देख पाओगे, क्योंकि दैट इज मैंडेटरी नाउ टू मेंशन इन एवरी पैकेट दैट व्हाट आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट रहता है फूड में, बट इट इज इम्पोर्टेंट, लाइक विटामिन है, मिनरल्स है. विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, डी और ई, जो इसमें मिल्क प्रोडक्ट में ज्यादा रहता है, एंड जो नॉन वेज प्रोडक्ट में रहता है फैट सॉल्युबल विटामिन है ये. एंड अदर विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, these are also required for our body. And minerals like calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chloride, that is also required. And और भी जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट पीपीबी और पीपीएम लेवल पे लगता है फूड में, which is very essential for our body, is like iodine, selenium, copper. तो अगर फूड में दिस माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, देन वो क्या होता है? कंट्रीज लाइक एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज में भी बहुत मेल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि प्रॉपर फूड में कार्बोहाइड्रेट बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा है, तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहता है. तो नाउ साइंस हैज डेवलप्ड फूड फोर्टिफिकेशन. सपोज कुछ फूड में अगर नहीं रहता है, तो additionally nutrients we can add in the food items, so that food can be enriched with nutrition. तो मेजर फूडबोर्न जो इलनेस होता है, फूड सेफ्टी का जो मेजर इशू है,
वो होता है, एक तो होता है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। बैक्टीरिया में कुछ पैथोजेंस है लाइक सैल्मोनेला, इकोलाई, these are very dangerous for our health, and sometimes it causes severe diseases as well as fatal also. Similarly, virus, we are all know the COVID virus, like this is also very dangerous. But fortunately, it has very less that mean chance for contamination through food. There are other virus which is dangerous for us, parasites also. And for chemicals, naturally occurring toxins. That means जो cereal product में जो होता है, mycotoxin, aflatoxin, cyanuric acid, these are produced in cereal products and grains. So that is also very bad for our health, and it is also cancer producing chemicals. So definitely food should be tested, and we have to ensure that food should not contain any kind of toxins, naturally occurring toxins. And persistent organic pollutants, ये क्या होता है, कुछ कंपाउंड होता है फूड में ड्यूरिंग agriculture, during farming, farmer add pesticides that is not usually degraded. So when pesticides are added in the farm by farmer, it is carry forward through food and it comes to our body, which is very carcinogenic and very dangerous for different kind of disease it can make. And some kind of PCB dioxin क्या होता है ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस में ये चीज पूरा एनवायरनमेंट में फैल जाता है. When cattle on other animals eat that kind of grass with contaminated with PCB or dioxin, तो उनका बॉडी में आ जाता है. When we take food, non-veg food more, there is a more chance of consuming PCBs and dioxin. So cancer ज़्यादा होता है उसमें. So that is the reason. So it is more dangerous, PCBs and dioxin for human consumption. And due to use of contaminated water from food, different kind of food grains as well as non-veg products like animal products. There are and fish also. There are more chance for getting contaminated with heavy metals, lead, cadmium, arsenic, or mercury, which damages our neurological system as well as kidney damage. Several diseases can be happened. Other chemicals which is very hazardous is radioactive elements as well as drug residues, antibiotics. These are all the contaminants which we should that we take care of. The food should not have any kind of contamination. So for this kind of analysis requires sophisticated equipment and state-of-the-art laboratories, which higher class we have, and we are doing analysis for different kind of different manufacturers, exporters, all these things we are doing over here. And also food additives and adulterants is also subject for that food safety, because intentionally for trade and business, intentionally it is added. You know that for packaged food sometimes you have to add, because otherwise the food will not be having much shelf life. To extend the shelf life of the product, it is intentionally added, sometime for profitability or sometime for lucrative thing, like colors are added, preservatives are added.
antioxidant or anti-knocking agents, emulsifier, enzymes, flavors also added, modified starch, stabilizers, uh, different kind of bulking agents. All these are chemicals and toxic for our body. So we cannot avoid completely, but as per the Codex guideline, as per the different our Indian guideline, it is FSSI. Some restricted limit are there. So permitted amount we can in food can be added. It can be added, but above that limit, it is harmful for our body, and we should take care of this thing. So that for that food standards and regulation, we need to understand there in India we have FSSI, BIS, EIC, APETA. These are the organization who making that regulation. Suppose in Indian market, if you go for Indian market for business purposes, you have to test your product as per FSSI guideline, Food Safety Authority of India. Some of the products like milk, skim milk powder, animal feed, and this kind of product, and also for water, BIS set their limit for safety reason, and EIC, if your product to be exported, then inspection agency EIC, there it is regulated by EIC. Similarly, fresh fruit and vegetable, APETA set their guideline for the limit of contaminants above that limit and below that limit. These are the set. These are the organization is very important. If you are in business, then you need to comply as per that standard. Then your food will be ready for consumption or as well as trade purposes. So for food, important part is shelf life. Nowadays, everybody knows what is shelf life. Suppose when you are going to shop for procuring one bread, you will definitely see when it was made, manufacturing date. So this awareness is very important for the next generation, and for our health. Shelf life is very important, and for shelf life testing, there are some protocol are there in different temperature, different humidity. You need to take the sample in laboratory, and on that basis, we can measure the shelf life of that product. As well as initially when sir is telling, he was telling the rightly that for packaging, there's a definitely when we take water from some metal container, it has some value. When we are taking from plastic container, there some leachate is coming. So then FSSI also set limit for the different materials, different migrants. Suppose for food container to food product, there, if there is a certain time is exposed, there is a chance for migration of that product, some of the contaminants like heavy metals, phthalates, and different toxic material. So as per FSSI now, for each packaged food, you need to do that migration test. Similarly, we know that for different different food having the different allergen, sometimes same food is okay for consumption for one person, but it is that mean not fit for other person, like who have the gluten allergen. It might be so for different products having the different allergens. So that is also a critical parameter for food, as well as some of the food are GMO, genetically modified food. So we should know which food is authentic
which food is not that means genetically modified. So that is a great research is going on still for the GMO and as well as organic food. Now everybody prefers organic food because original food there is no chance for any kind of disease or it is beneficial for your health. Similarly, now it is mandatory for food labeling. Everybody should know that label what it declares, and definitely before labeling, sample are tested from laboratory. Then label will be in the packaging thing. As well as we talk about food, most of the food produced from water. So if water is contaminated in agricultural field or in manufacturing, and the food will be not safe. So water is for nowadays for every manufacturing field, testing of food is important, as well as once in a year you have to do complete test for water analysis. So we discuss about the source of that different unsafe food and contaminants. And now definitely we have to know the solution also. Otherwise, the discussion is not complete. Hena sir? Right, sir? Yes, yes, right. Because in many discussion we talk about the issues, but there should be we should know the solution also. So similarly, when we started, all that contaminants coming from agricultural field to the end user in our plate. So how we can control this thing? Suppose in farm, if farmer produces more food from adding pesticide and all these things, adding different kind of suppose antibiotic also. Suppose when you are culturing fish or animal food milk, antibiotic also added. So farmers should know what is the good agricultural practice. Some limit are there. If within limit you can add, then there is no harm. So good agriculture practice is very important. In other country like in India, there are more small farmers, so it is difficult to implement. So government are also implementing policies for good agriculture practices. So in that way, we can avoid that contamination. When we are adding the thing in the initial, it is carrying forward to our plate. So we can stop over here. In storage, effective, accessible post-harvest technology can be used. In transit, cold chain system and proper packaging should be there. Then we can avoid cross-contamination and moisture, adding that moisture. Moisture is a most important that will factor for unsafe food. You know, when in food moisture is there, then there is a chance for microbiological growth as well as cross-contamination chances are there. In processing also complaint practices and facilities should be there. So that more Satish ji will focus on that area in processing also. And in market, regulatory control should be there. Suppose before 10 years there was no control. Now FSSI implemented very nicely. So every food should be tested. Otherwise they cannot go to market. So there is a already regulatory body in India. Particularly, there is a very strong regulatory control out there. So day by day it is increasing, and for our health it is good. And for user, a demand of high quality produce. If there is a demand, that manufacturer definitely they will work on this. So if there is a awareness, then there will be demand for a good food. Suppose before that we don't know about organic food. Now everybody is telling I need organic food. So
this demand will enforce governments as well as manufacturers for making the food more safe. So in that way, we can, these are the few steps, actions that can to reduce that food safety. That is from my end. The pictures of our laboratory. So thank you very much, sir. थैंक यू वेरी मच सुदेव जी, बहुत अच्छा आपने बड़े शांत और ठहरे हुए गंभीर भाव से पूरा एक्सप्लेन किया। एक्सीलेंट। अग्निहोत्री सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। अभी हम लोग डॉक्टर सुदेश मंडल जी की बात सुन रहे थे और सुदेश मंडल जी ने बहुत ही गहराई से, हालांकि थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन बहुत ही गहराई से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया, जिससे कि अगले अतिथि वक्ताओं का थोड़ा काम हल्का हो गया। अब वो जो उनके अनटच्ड एरिया है उसको वो कवर करेंगे, लेकिन आपने जिस गहराई से बात की कि निश्चित रूप से फूड जहाँ एक और हमारा स्वास्थ्य देता है, वहां उसके माइन्यूटेस्ट पार्ट पर भी अगर कंटामिनेशन हो जाता है या इवन पैकिंग लीक कर जाती है, कहीं कोई चीज होती है, तो एकदम मतलब एक तो रेडी टू ईट होता है। और जैसे पिज्जा है, बर्गर या पिज्जा बेस है, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कितना खमीरा डालना चाहिए, कितना ओवर हो गया, एक्सेस हो गया, चीजें खट्टी निकलती हैं, दही खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी टेस्टिंग, रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो हरिद्वार से हमने देखा है कि जो हमारा फूड पार्क है पदार्था में, रामदेव जी ने स्थापित किया है, कितनी सारी लैब काम करती है प्रतिदिन बेसिस पर मेडिसिन के लिए। फूड 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 सिस्टम जितना है तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग जो स्वस्थ तो ज्यादा है, बीमार कम है ना। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम के लिए शुद्ध और खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और पहुंचे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी। नाउ आई एम इनवाइटिंग डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। वेलकम सतीश जी, वेलकम। योर एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली इंस्पायर अस ऑन फूड सेफ्टी। स्वागत है, आपका स्वागत है। भाषा हिंदी इंग्लिश मिलकर चलेगी, बड़ी अच्छी लगती। ओके, ग्रेट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So, good evening, everyone. Am I audible? Yes. Quite nicely. Perfect. And screen is visible? Perfectly. Perfect. Good. So, good evening. Namaskaram. First of all, thank you for this platform and the opportunity to talk on the food safety standards. I'm very honored and privileged to be a part of this AYUSH fraternity to be talking on this point. So thank you so much, and wishing everyone a happy World Food Safety Day 2023. So coming on to the topic, I'll be taking on the food safety standards, protecting lives. This is one of the themes of this 2023 World Food Safety Day. So I'll be just taking a tour in my next 15 to 20 minutes, and I'll try to stick to my time in this period. Okay, thanks. Yeah. So the agenda for, I think there is some, this 1 minute. The agenda for the session which I have it, we will talk about what is food safety. My colleague Mr. Sudev has already touched upon it, but I'll also take it very briefly. On that point, he has gone much in elaborating, talking about the contaminants and the hazards, but I'll be talking about a brief the food safety and the food safety standards, why it is important to have the food safety standards. So that we will be touching upon. The key global food safety standards, what are the different standards and how are they going to help? So I'll be touching on a few of them, like the ISO 22000 or the FSSC 22000, the BRCGS or the FAMIQS. What are these standards and how, what are they looking for? What is the intent of this standard? Or what are the requirements of this standard? And finally, a takeaway. Any session should give you some conclusion and a takeaway.
So what is the takeaways from this session that we will be looking in this session, in this presentation? So first, a brief about our organization. As our organization is IR class, we in 1975, way back, we were incorporated by the Indonesia Shipping by the cabinet decision of the steering committee, and IRQS, that is a division of a division with was being formulated in 1993 with the name into certification as well as the training services. And in 2022, as Mr. Sudebji is heading the testing services, we have an enabled accredited laboratory in Jaipur. And these are our offices. So we have a head office in Mumbai. We have 20 offices in India and 4 regional offices. These are some of the schemes which we do it with FSSAI. Just for the information of all of you, that the FSSAI has a lot of projects in terms of food safety, and they have also beautiful standards laid down for the different sectors. Like for the temples, it is the BOK certification, or for the catering, or for the mithai shops, or the meat shops, they have hygiene rating. The cow gullies, the clean street food hub, Eat Right campus for the institution's canteen. So these are the projects which we do it with FSSAI. We have also the clean street fruits, fresh fruits and vegetables. These are for the sabji mandis. So for the sabji mandis also, there is a standard by FSSAI for auditing and for certification. So you can understand standards. Again, coming to the standards point of view, why standards are so important. Without the standards, how the systems will be set up. So the intent of the slide is 2 purposes: what we do it and what the standards bring about. And these are some of our few esteemed clients in food sector. Now, these are the food schemes which was covered by IRQS, like the ISO 22000, the development program, the FAMIQS, BRCGS, BRCGS start. We'll be touching upon these in short in the further slides, in the future slide, forthcoming slides, a brief about this. Now, when we talk about food safety issues, we all know that though food safety is like, our right, we all deserve to have a safe food. Then also there are food safety issues. Like I give an example, there was a case of a needle found in a strawberry. Now you can understand strawberry is a natural product or a natural fruit, but a needle was found in in the strawberry. Or similarly, there are cases like the food poisoning in Japan schools of 3,500. It had hit, or it was people were affected. Or it could be the passengers fall ill after or on a food poisoning on a train on a Mumbai Ahmedabad Shatabdi Express. Or it could be like on a Mahashivratri Prasad, after eating a prasadam. Like you can understand, we eat a prasad with so much of that trust and that faith. हम कभी कभी प्रसाद में अगर हमको कुछ पत्थर या कंकड़ मिल जाएगा तो हमको लगेगा कि हमने कुछ कुछ we have committed a sin and therefore we have got this. But you can understand that prasadam is equally important. Now, eating a prasadam and people are falling sick, and therefore you can understand that there are the bhog certification, that is blissful hygienic offering to God. FSSAI has made this a voluntary certification or promoting it, that yes, go for this certification for the temples, the gurudwaras, a place of worship, so that you set your systems in place, you set your food safety procedures in place. So that's the idea. So you can see these are the issues which are there, like even for the testing, not only from the food poisoning or the food cases where or the food fraud, but also in case of what the food samples found adulterated or misbranded. There were 26,000 food samples which was found by FSSAI in 2018-2019. So that also is very, very important. Keep maybe procedures है सही, वो कैसे पता चलेगा? जब हम verify करेंगे. Verify कब करेंगे? जब हम इसको testing करवाएंगे. So that is also equally important. So these are the food safety issues which is cropping up, day in and day out, something or the other is there. You can see about the FSSAI report on the food samples being tested or found adulterated or substandard. So as Mr. Sudeb was also started with the right, the context that every year millions of people
around the world, globally, they suffer from foodborne illnesses. So this is an issue, though it is our right, people are supposed to follow it, but then also people suffer from foodborne illnesses. So it is a global concern. It's a very, very important global concern, affects everyone. Not only it affects everyone from the farm till the fork, or from the producers till the consumers. By the time it is being made or prepared at the farm level, maybe in terms of the pesticides, the heavy metals, in terms of the unhygienic practices, the unsanitary practices, till it comes on the plate. So all this is a very, very important concern in food safety. And therefore it is said that food we eat should be free from harmful contaminants or the hazards, or should be free from the pathogens, the disease-causing organism that cause serious illnesses, and even it could be fatal, or it could cause death. So it's a concern, a global concern, and therefore standards, the food safety standards becomes very, very important, or the food safety standards needs to be formulated in this context, that these are brought to a considerably low level, or it should be minimized. Now, what are the challenges which we face? Complexity in the food supply chain. As you know, like, let's take a simple example of, the COVID-19. No doubt the COVID-19 or the coronavirus is not a food safety issue. It has not been proved yet that coronavirus is transmitted through food. But yes, coronavirus has given, or the COVID-19 has given, a free training globally. A free training, I will say, globally, where people have become more conscious of, the personal hygiene, or washing hands, sanitization, etc. So it's like, a thing which needs to be imbibed. We need to know how it should come from within, that how we need to go about by the hygiene process. So complexity in the food supply chain, number of suppliers, even nowadays, like, you see that the in the family as well, like when if it is a weekend, people don't cook food at home. पहले कैसे था? पहले घर में खाना बनाते थे, अपने it should be within our premises. But अभी क्या होता है, कोई भी function हो, कोई event हो, या birthday हो, कोई भी weekend हो, the easiest way is to order it online. Maybe it is a cooked product or a finished goods, or it is a raw material as well. Like, there are so many online online things which is there, where you can order it easily, so that is also. But कितना safe है, कैसा, किस temperature पे वो product आ रहा है आपके घर पे, how safe it is for the consumption. So that becomes an issue. Food trade globally, the geographical coverage, rising number of the multi-state or the outbreaks which is happening, the pandemic which we were talking about, new emerging germs, like, you can see coronavirus, no one was aware of it, but it just came up. No doubt it's not a food safety issue, but similarly, these type of germs or the toxins or the antibiotic resistance, that as lightly said, that the animals are becoming resistant to the antibiotics, or the veterinary drugs which has been fed to the animals, the malachite green or the adulterants, the Sudan dyes, the traceability is an issue. Consumers are better educated. We are more conscious. People know what is an allergen. Maybe we know, and therefore we look at the label as it was told previously, the nutritional facts, whether it is now FSSAI is also coming up with high sugar, high fat, high salt, some sort of a star rating. So people will become conscious, and people are educated, well informed about the food as well as the food safety issues. Customer demands and preferences. This is very important nowadays. You can see with the emerging technology, as well as the the growth in the food sector, edible insects. No doubt it is giving you the nutritional facts or the nutrition point of view. But how safe it is to consume the edible insects, or the legalization of cannabis sativa, that is a hemp, which has been there legalized in some countries. So these are the things which needs to be looked into, that the customer preferences are also changing over a period of time, and therefore these are the challenges in the food safety sector. Now, what are food safety standards or the food standards? These are the guidelines or the regulations which is governed from the production, the processing, packaging, distribution of the food. So every sector in the food chain or the food supply
has to has to follow certain guidelines to ensure that the food is safe. And who is developing it? The government agencies, international organizations, industry groups. I'm a part of the, I'm representing ISO, I'm representing India, or through BIS, I'm the a part of the ISO committee, as a technical committee. So I'm also I'm representing India, and I put forward my, after taking it, the views from my colleagues, or my, the technical expert or the committee from India, then I represent it. I put it forward to the on the global front. So industry groups, these are all important, and they develop these standards. And the beauty of these standards are that they are based on a scientific research. So whatever is put on the, on that 40 pages document, or the you call it as 100 pages document, or whatever comes in the regulations, maybe the food law or any other regulation, everything is based on a scientific regulation, based on a risk assessment and the stakeholders or the interested parties consultation. So that is very, very important, so that the standards are user friendly, as well as it should be giving a proper outcome as well as a result. So now, why these standards are important? As I was saying, that these standards are developed with the intent of, or they are made with the scientific research, as well as the risk assessment, consultation of the stakeholders. And this helps to minimize the, or keep the food products, or ensure that the food products meet the minimum food safety requirements, which are fit for the human consumption. They prevent the foodborne illness, reduce the risk of contamination. Moreover, they promote the international trade. It's like easy for us to follow a certain guidelines or a certain requirements or a regulation, so that we get the passport to the market, the global market. So that is very, very that is important. It also helps to protect the vulnerable populations, such as the children, pregnant women, or the elderly people who are susceptible to the foodborne illnesses. And finally, very important, that is, it promotes trust in the products, as well as prevent the costly recalls, or anything which is leading to the lawsuits. Now, these are the key global food safety standards, which is on the screen. If you see this, the Codex Alimentarius is formed by the WHO, that is the World Health Organization, and FAO, that is the Food and Agricultural Organization. Jointly, they have formed the Codex Alimentarius Commission, which formulates the international food standards. And it's a beautiful site. You get standards for every product, or for a process, like, if you want it, it's freely available on the website. You can go and you can access this standards as well. So the Codex standards are, and it forms a foundation and a base for the different, the ISO or the international standards as well. ISO, the internationally recognized standard. So this is also one of the standards. GFSI, Global Food Safety Initiative, that is also a committee, a technical committee, which is formed by the 45 retailers and the producers, which benchmark standards. So, like if you see on the screen, there are these are the few the BRCG, the GFSI benchmark standards, where the standard requirements are given much more in much detail, based on the scientific evidence. So some of them are the BRCGS, the Canada GAP, or the FSSC 22000, the Global GAP, that is for the agricultural practice, the IFS, the SQF. These are some of the standards, the GFSI, the key GFSI standards. So let's go a little bit more into of these standards and what they intend to take it. So if you see the ISO standard, the ISO is nothing but the International Organization for Standardization. So it's an organization which prepares or develops standards. So one of the standard is ISO 22000, which is on the food safety management system. So that is one of the standards. There are so many ISO standards, but there's one of the standards on the food safety, that is 22000.
It's ISO is a non-governmental organization, and it is a network of the national standards institutes, which comprise of the 165 countries. Which is these ISO standards are prepared with the help of all the experts which is there globally, and achieved by a consensus. It's not like one country, if it is applicable to one country, maybe not applicable to others. No, it's not like that. Everyone is taken into confidence, into the consensus is taken, and then it is being published. And the more very important is these are auditable requirements. So organization can use it to audit their premises, to check whether they are in conformance with the food safety requirements, and everything is in place. So the 22,000, the recent version, or the second edition, was the current version is 2018. This is also under review, but the current version is the 2018. And if you see the goal, one internationally recognized standard that can be applied to any organization in the food chain. Any organization in the food chain, that means from the farm till the fork. And it is an internationally recognized certification program for food safety management system. So this is the way the standard looks in. And if you see any organization in the food chain. Now the question comes in when I ask most of the people that, is food safety applicable for the transporter, or to the retailer, or to the farm level, or to a an organization preparing or manufacturing chemical for a food industry? So that becomes a question, that whether this is applicable for these organizations, like a chemical manufacturing industry for a food industry, or a pest control agency which is doing it, they are giving their services for a food industry. Please note, yes, if it is related to the main actors of the food chain or to the supporting services, everyone comes under the scope of the food safety management system, that is ISO 22000. So if I say the farm to the fork, when we say farm to the fork, if you see, these are the main actors. That is the crop producers, the feed producers, even the feed producers, like they are producing, the food for the animals. Okay, so that is maybe it is the pet animals, or the non-food producing animals, or the food producing animals. For both the primary food producers, the wholesalers, retailers, even the producers of pesticides, fertilizers, and the veterinary drugs, if it is related to food industries, cleaning agents, equipment manufacturing, if they are manufacturing equipments to a food industry, like for a dairy industry, we are using an equipment, or for a catering industry, we are using an equipment, or for a manufacturing industry, we are using an equipment. Yes, it is applicable to them as well. Packaging industries, food packaging material, like the paper, the glass, the metal, that is also applicable for these the 22,000 or the food safety standards. So what are the advantages of this? It's an auditable standard, so you can verify it. It's a very clear requirement, internationally accepted. It integrates and harmonizes the existing national and the industry-based certification. So it's a generic standard which you can try to link it with your regulation or the other international standards as well. And it addresses to desire for harmonization from the food processing industries concerning the food safety. Now I was talking about something, a more stringent way of looking at it, where more detailed requirements are there. That is the GFSI, which is formed by the Consumer Goods Forum, and they benchmark the processes for these food safety schemes. So the intent is to benchmark it, to make it, recognized by GFSI, means it's one of the, reputable recognized standards. So let's see some of the GFSI standards. So FSSC 22000 is one of the GFSI benchmark standards. FSSC stands for Food Safety System Certification. And if you see, this standard is based on ISO 22000. I'll just give a brief about it. I'm not going much in depth because this is just a very brief session on the standards. So just a brief about it. So FSSC 22000 includes ISO 22000. Please note, one of the elements of FSSC 22000 is ISO 22000.
applicable sector-specific prerequisites or some standards are there which is pertaining to a certain sector. Like for the catering, there will be specific requirements for a farming, for a retailer, for a storage, for a manufacturer, for a packaging industry, for a feed industry. So there are certain sector-specific requirements which are given in some other ISO standards, which is called as a 22002 series. So there are part 1, part 2, part 3, part 6. This is also under revision, but yes, they are currently it is having 6 parts. And there are certain FSSC additional requirements as well. So this is also given in the part. And all these 3 elements combined to be calling it as FSSC 22000. Now, this is an overview of FSSC 22000, where, there are 32,000 plus certified organizations under FSSC 22000, and it is an accredited certificate. The current version is version 6, which was released in April 2023, and it is applicable to these industries like the retailers, the catering, transport, food manufacturing, food packaging, and the animal feed production. Now, this was all about FSSC 22000. Now, sometimes it becomes like, difficult for small organizations. They say, oh, we won't want to go for FSSC 22000. It's a very, only bade organizations hi ja sakte hain. So FSSC has come out with people to promote or to encourage them to go for food safety standards. And that is, they have come out with the FSSC development program. Now, why I'm talking about it, please note, it is not only that the ISO standards are only applicable to the big giants, or only people can do with who has a good infrastructure and competence, etc. So there are other standards also which helps you to take the food safety standards or food safety gradually. And one of these standards is the food safety development program. So it's like a stepping stone model. Like, you can go like, in steps or in different levels, that once you build up your foundation, your base is created, then you can go to the next level. So gradually you can build up your food safety in terms of the different requirements which is there by the internationally accepted standards. So you can see there are the level 1 and the level 2, and finally the FSSC 22000. The level 1 is the conformity assessment, where they have the basic requirements in terms of food safety. Level 2 has a little more requirements, and FSSC will be a full-fledged certification. So level 1 and level 2. So that's the beauty and the advantages. If you feel, अगर किसी organization को लगता है कि नहीं अभी level 1 से directly second year में level 2 नहीं जा सकता, so they can be in level 1 to make that, to ensure that उनका systems strong ho jaye, ya their foundation is very very strong, and then they can go for level 2. So they can be in level 1 for 1 year, 2 years, 3 years, as long as they have not implemented the systems correctly. These are some of the benefits for the small and the medium scale enterprises. It is a good standard stepping stone model. Don't have the full-fledged requirements, and because of that people get demotivated or they don't go for this standard certification. It's a stepping stone model. Flexible hai. It can be used for your suppliers. That means even the suppliers plays a very important role in terms of the food safety. मैं कितना भी अच्छा manufacturing करूँ या production करूँ, but if I don't get a proper raw material, or if I don't have a verification on my suppliers, then obviously my raw material will not be meeting my my final product will not be meeting the requirements. So, or the limits which is there. So the aflatoxin limit, or the hazards, or the heavy metals, etc. So I need to ensure that these suppliers are also being checked upon, and that is a very standard which can be used. This can be available on the public register, and it's a low duration and a low cost certification. The second GFSI standard is the BRCGS, where the full form is Brand Reputation Through Compliance Global Standards. Their head office is in London, and it is based on an ISO standard of 17065. Again, it's a GFSI benchmark standard. And this standard also has different areas, or the different standards are there. Like this on the screen, if you see,
it's the food safety standard. Similarly, you have the BRCGS packaging, you have the BRCGS, the agents and brokers, you have the BRCGS, the different standards are there. So there are different standards which are available for the in BRCGS as well. So they can also go for the food safety requirements depending upon the buyer or the requirements of this organization. Now, as I was talking about the stepping stone model or for the small organization, BRCGS also has a small a scheme or a standard for the small and the medium scale enterprise. That is a BRCGS start. So this is also like a stepping stone model where if you see, like first they can go for a BRCGS start basic, then an intermediate, and then a final a full-fledged BRCGS. So again, a stepping stone model where it is always said think bite-sized. Now we talk about so much of food, but and we talk about packaging, like the migration test limits or the packaging material, etc. But even feed is important. So there is a feed standard as well, which is called as what the FAMIQS. And FAMIQS is nothing but quality and safety systems for specialty feed ingredients. So it is basically for the ingredients which has been given to the feed manufacturers. So that this is a specialty feed ingredients, whether it is an additive or a mixture, etc. Now this scheme also was in 2004. It's an industry-driven initiative, and based on the feed hygiene regulation, which facilitates international trade. Now the intent of this standard is whatever is being fed to the animals, ultimately, if it is a food producing animal, it will be consumed by the the humans. So ultimately it is going into or it is leading to a bioaccumulation, or it will affect the human health. So feed ingredients are equally important. मैं कहीं देखता हूँ कि feed होता है ना, तो people don't talk about hygiene, they don't talk about the heavy metals or the pesticide, etc. But they don't think that ये अगर heavy metals pesticide ज़्यादा होगा feed में, तो ultimately अगर यही chicken will be consumed, it will lead to what it will be going into the next level of the food chain, that is to the humans. So that needs to be also been looked into, and some of the countries are very, very strict in terms of the feed regulation as well. So this standard helps into the feed regulation point of view. So as I was talking about, the safeguard the feed supply chain and the specialty the feed ingredients. Now we were talking, I just gave you a gist about or a brief about the different food safety standards. Now what is the success behind this? If any standard, now we know that the issues are there and the standards are there. If these standards are implemented correctly. 5 minutes left. Yeah, actually time is over, like in 5 minutes, please. Okay, fine. One speaker is left, and on 9:30 we have to start other webinar also. Okay, I'm just done. I'm just 2 slides more. 2-3 slides more. So आपको रोकने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग और बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं कि हमको सब सीखने के लिए है। नहीं ठीक है, थैंक यू। अगले बार में लेकिन आपका फुल लेंथ है कि 1-1.5 घंटे का स्पीच भी रखना। अभी से इनवाइट कर रहा हूं मैं आपको। नहीं, thanks so much, thank you so much. So the food safety standard needs to be implemented to the correct intent, and therefore it will lead to a proper effective way of doing your procedures properly. So these are some of the takeaways and the conclusions. What I feel is the competence is very important, the right person for the right job. लोगों को क्या स्टैंडर्ड पता होता है, रेगुलेशन पता होता है, बट दे आर नॉट अवेयर कि क्या कौन सा स्टैंडर्ड कहीं पर। जैसे दिस आई लाइक दिस फोरम इज अ नॉलेज शेयरिंग फोरम। सो दिस टाइप ऑफ नॉलेज शेयरिंग फोरम अगर अटेंड करे तो मुझे पता चले कि अच्छा ये स्टैंडर्ड है, ये रेगुलेशन है, तो फिर आई विल बी अपडेटेड टू नो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एप्लीकेबल है। टेस्टिंग एंड एनालिसिस, आप ये इसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जहां पर इट विल हेल्प यू टू हैव द सेफ फूड। सेल्फ इवैल्यूएशन,
स्टैंडर्ड्स पता होने के बावजूद भी अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में, so then it will be futile, like, you know, so self evaluation is also important. And the supplier quality assurance, which I was talking about in terms of the supplier audits or the supplier assurance, so the vendors को भी आप कर सकते हैं. ये सब standards can also help you for the third party certifications which by an accredited agencies. Periodic updation, now this is very very important, that लोगों को standards पता होता है, but कभी कभी ऐसा होता है कि aflatoxin का limit change हो जाता है और वो updated नहीं होते. तो you need to see that, you know, आपकी regulation या आपकी जो standards है वो कितने बार update हो रहे हैं, and that needs to be also, you need to be periodically abreast with what is happening in the industry. And finally, the behavior of the food safety culture. I think that ये सब करने के लिए आपको एक अंदर से क्या होना चाहिए, लोगों को एक culture होना चाहिए where they are self-motivated to take up these, the standards to the right intent. So finally, you can trust your food by only following the food standards, which is a vital shield for the public health. So this is very important. Follow the food standards correctly with the correct interpretation. And that's it. Thank you so much. Stay safe, stay healthy. I hope I was able to meet the time, little bit of exceeded. Maybe no, I have not exceeded. Not a problem. मेरे तो मन में इच्छा रह गई कि और सुनना बाकी है. आपसे जितना सुना उतना सीखने को मिला. I was vice president in Imami. Wow, wonderful, wonderful. Looking after Jhandu. So Jhandu had medicinal range, R&D and quality control and clinical research all. And we have healthy and tasty range of oils, Imami Agrotech. So I was involved in clinical researches and quality control of oil range also, oil and masala range. So really it is inspiring. Really it is inspiring. Thank you so much. Agnihotri sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Pam Sharma, and thank you, Dr. Satish Kumar Gupta. Really, you paid full attention on your subject, and you made us greedy. और कहते भी हैं जो ज़्यादा अच्छा खाना होता है थोड़ा ज़्यादा खा लिया जाता है. The time is that not that with problem. But as you hail from Mumbai, and you know, as you told that the food supply chain is also to be observed properly, and that is the case with the Dibba Wala. You see, by decades they are supplying food. Dibba, we cannot forget the Dibba Wala, and they are providing wonderful food to everyone. And the total stuff of your presentation influenced me a lot. But the better thing which influenced me is your English pronunciation. It's a wonderful. I recall my BHU days where the persons, it was said that the only 3 persons they speak English there. One of the Amol sir, one of our Professor Deshpande sir, like that. So this is what you were just referring to. Your stuff was what different, but your pronunciation and fluency of English, it itself proved with that the class which you belong. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. Thank you. Thanks. Class of the class, IR class. Class within the class. Oh my goodness, I'm honored. I'm really honored. Thank you so much. Thanks. Excellent. Thanks. So now I would like to request Dr. Rishabh Bora. Dr. Rishabh Bora, please unmute yourself and open the video. Dr. Rishabh Bora, welcome. Dr. Rishabh Bora is lecturer in medicine, means Kaya Chikitsa, in Ayurvedic College, Anandapur, PM Mehta Ayurvedic College. Welcome, Dr. Rishabh. Please unmute yourself. आप म्यूट है. आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋषभ जी.
Thank you, Nishant ji, for introducing Rishabh to us. Namaskar. Dr. Rishabh Vora, he is a postgraduate in Kaya Chikitsa. He is at present working at Sri V.M. Mehta Ayurved College, Anandpur, as lecturer in the Department of Kaya Chikitsa. He is studious and he has very good approach towards learning and teaching Ayurveda. He would be describing some of the aspects related with the food safety because this is the area of his interest. I am introducing Dr. Rishabh Vora to share his views on this platform. Thank you very much, sir. Thank you जी. ऋषभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं. समथिंग इज रॉन्ग. म्यूट भी है और साथ में कुछ कनेक्शन की दिक्कत है. कनेक्शन चेक कर लीजिए प्लीज. जब तक उनकी आवाज आती है तब तक मैं अपनी नेक्स्ट वेबिनार के विषय में बता दूं. आज विश्व पोहा दिवस भी है. यह अग्निहोत्री सर ने अभी गाइड किया और हम बड़े गर्व से सम्मान प्रकट करते हैं. डॉक्टर साधना वाइकर जी, प्रोफेसर गुंजन शुक्ला जी फ्रॉम जामनगर, निशांत जी धन्यवाद, डॉक्टर मीरा सपरिया जी फ्रॉम राजकोट. ये हम पोहा दिवस सेलिब्रेट करेंगे. खाने को तो नहीं मिलेगा लेकिन बातें तो सुनने को मिल जाएंगी. ऐसा शायद ही कोई जिसने खाया ना हो. गुरु और ऋषभ जी एक बार कनेक्शन दी. कनेक्शन कोई दूसरे इक्विपमेंट से मोबाइल से जुड़ लीजिए. वॉच इज नॉट गुड. मैं तब तक जब तक ऋषभ जी जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी को इनवाइट करना चाहता हूं. डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनके कमेंट्स आज की वेबिनार पे. नमस्ते डॉक्टर साहब. नमस्कार. नमस्कार सर. आज की वेबिनार बहुत अच्छी रही. फूड Hello. Yes, your voice is Am I coming. audible? Yes. 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 सबसे पहले धन्वंतरी भगवान को नमस्कार करता हूँ और आदरणीय पवन शर्मा सर, द्विवेदी सर, अग्निहोत्री सर, शुक्ला सर तथा और जो भी गुरुजन यहाँ पे मौजूद है उन सबको नमस्कार करता हूँ. वैसे तो मैं काय चिकित्सा का सब्जेक्ट ही बहुत डीप में ज्यादा जाता हूँ. ये क्योंकि ये आयुर्वेद से संलग्न विषय है इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे थोड़ा बोलना चाहिए. वैसे बहुत ही महानुभाव व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है तो मैं तो बहुत ही छोटा हूँ उनके सामने, फिर भी मेरे कुछ विचार यहाँ पे प्रकट करता हूँ. जो आज जब हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, फूड सेफ्टी के बारे में, तो आहार के बारे में आयुर्वेद में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है. आहार विधि विधान बताए हैं, आहार विशेष आयतन बताए हैं, आहार की मात्रा के बारे में बताया गया है, काल के बारे में बताया गया है, कैसा खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बहुत ही विस्तृत में बताया गया है. जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद के दो प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम. तो आहार हमें या तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए या तो रोगी के लिए पथ्य आहार कौन सा है वो तय करना है. एक वैद्य की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आहार से ही आयुष्य बनता है. अगर आहार सही है तो ही बल वर्ण सुख आयुष्य प्राप्त होता है. इसकी वजह से आहार के बारे में चर्चा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. जैसे कि आगे सर ने बताया कि पेस्टिसाइड्स का उपयोग आजकल बहुत हो रहा है. कहीं ना कहीं जो पैकेट फूड है उसमें प्रिजर्वेटिव आ रहे हैं. तो ये सब को हम आज के समय में विष
मान सकते हैं। जो आयुर्वेद में दूषी विष और घर विष की संज्ञा दी है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे कैंसर तक की बीमारियां हो रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे विष के जो गुण है वो ओज के विपरीत गुण वाले हैं, और ओज जो है वो हमारा बल है, वो व्याधिक क्षमत्व ओज या बल की वजह से हमारा काम कर रहा है। तो ये जो विष जो है जो हम आहार में कंटिन्यूअसली ले रहे हैं कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स की वजह से, तो उसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 इज एलर्जिक डिजीज, टाइप 2 and 3 आर ऑटोइम्यून डिजीज, टाइप 4 इज आइदर कैंसर और लेट हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये सारे जो बीमारी जो हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो पेस्टिसाइड्स और जो फूड की सेफ्टी हमें रखनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है आज के समय में, उसकी वजह से हो रही है। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमारे शास्त्र में बताई है, वृद्धि समान ही सर्वेशम विपर्ययस्तु विपर्ययः। तो जो भी चीज हम हमारे शरीर के अंदर लेंगे उसी धातु की वृद्धि होगी। जैसे मांस से मांस की वृद्धि होती है, मांस धातु की वृद्धि होने से भ्रूण होता है, इसीलिए मांस जो है वो भ्रूण करता है। उसी प्रकार स्नेह से मेद की वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि समान ही सर्वेशम हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो अगर हम डाइट के अंदर जिसे भी भाव हम शरीर के अंदर आहार के माध्यम से ले रहे हैं वही भाव हमारे शरीर को बढ़ाएंगे। अगर हम विष ले रहे हैं तो विष ही बढ़ेगा। तो कंटिन्यूअसली एडल्टरेटेड फूड या विषाक्त आहार खाने से शरीर के अंदर खराब भाव की वृद्धि हो रही है और जो धातुएं बन रही है वो विषम धातु बन रही है। तो विषम हमारा एक चिकित्सा का मेन दो हमारे बताए हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। उसके अलावा सूत्र स्थान 1 में चरक संहिता में बताया है धातु साम्य क्रिया तंत्र से प्रयोजनम, मतलब धातु को सम रखना है। अगर हम आहार जो खा रहे हैं वही विषम है, वही विष वाला है, तो जो धातु बनेगी वो भी वैसी ही बनेगी, जो हम खाएंगे वैसी ही धातु बनेगी। आयुर्वेद में हम कार्य कारण सिद्धांत का बहुत ही डिटेल में अभ्यास कर रहे हैं। जैसे ये निदान सेवन से यही होगा, कटु अम्ल लवण रस से पित्त की वृद्धि होती है, मधुर तिक्त कषाय से पित्त का क्षय होता है। तो जैसे रस हम आहार में लेंगे वैसे ही हमारी धातु बनेगी, वैसे ही दोष की स्थिति बनेगी। तो विषम धातु अगर बन रही है तो उसके लिए चरक संहिता में बताया गया है कि त्यागाद विषम हेतु नाम, उसकी चिकित्सा ऐसी बताई है, त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चोपसेवनात्, मतलब जो भी विषम हेतु है, जो भी आहार में विषाक्त है ऐसी चीजें बंद करनी है। और समानाम च उपसेवनात्, मतलब जो सम आहार है वैसा आहार लेना है। इसकी वजह से क्या होगा, विषमानानुबध्यन्ते जायन्ते धातवः समा, और इसकी वजह से धातुओं सम रूप में बनना शुरू हो जाएंगी, विषम धातु फिर से नई नहीं बनेगी। और यही हमारा कर्तव्य है, धातु साम्य क्रिया प्रोक्ता तंत्र से अस्य प्रयोजनम, जो कि चरक संहिता में बताया गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है हमारे लिए। मैं जब यूजी में पढ़ रहा था तब मैंने बीएमएस जूनागढ़ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जूनागढ़ से किया है। वहां पर मैं एक बार सब्जी मंडी में गया था, वहां पे मैंने देखा एक बहुत ही बड़ी जगह में कच्चे केले थे। कच्चे केले को वो लोग कोई उनके पास कोई लिक्विड था उसके अंदर डीप करते थे, 5-10 सेकंड रखते थे, फिर बाहर निकाल देते थे। ऐसा करने से वो तुरंत ही 3 मिनट वो ग्रीन में से येलो कलर पकड़ लेते थे और पक जाते थे। ऐसे ही आम के बारे में भी हमें आजकल पता है कि जो कच्ची आम है, कच्ची केरी है, उसको उसमें कार्बाइड डाल के उसको पका देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि
आजकल जो जमीन है वो कृत्रिम खातर के उपयोग से और पेस्टिसाइड्स के इन सब के उपयोग से जमीन भी बहुत खराब हो रही है। तो ये पूरा का पूरा एक कृषि विज्ञान का, एग्रीकल्चर का एक बड़ा टॉपिक हो गया। और इसके लिए ऑर्गेनिक खेती की, ऑर्गेनिक कृषि की एक मांग आज खड़ी हुई है। यहाँ पे गुजरात में हम गाय आधारित खेती के ऊपर भी बहुत सारे लोग भार डाल रहे हैं। गाय आधारित खेती से, ऑर्गेनिक से भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती है और कोई भी प्रदूषण कुछ भी भूमि का नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। दूसरा एक उपाय इसका ये है कि जो आजकल सब लोग को पता है कि जो सदगुरु जी है, सदगुरु जो ईशा फाउंडेशन के हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट उठाया था, सेव सोइल मिशन। तो सेव सोइल मिशन के अंतर्गत उन्होंने पूरे विश्व को जागरूक किया इस बहुत ही गंभीर विषय के बारे में कि अगर भूमि ही ठीक नहीं होगी तो कल को आप क्या खाएंगे, 100 साल के बाद कंडीशन क्या होगी। तो उसको ध्यान में रख के बहुत सारे पूरे विश्व में बदलाव आना शुरू हुए हैं। उन्होंने एक गवर्नमेंट को एक पॉलिसी भी बना कर दी है कि अगर इस हिसाब से, इस पॉलिसी से अगर हम चलेंगे तो धीरे 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 हम आजकल जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उससे हम निकल के ऑर्गेनिक तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही शानदार उपाय हो सकता है। और बाकी तो ये जो IRES के जो ये लेबोरेटरी है वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो ये भी सराहनीय काम है उनका। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आयुर्वेद में हम कहीं फूड सेफ्टी के बारे में ढूंढने जाएंगे तो वो हमें विष के साथ कोरिलेट हम कर सकते हैं। और इसकी वजह से ही, विष की वजह से ओज में यानी कि इम्यूनिटी में गड़बड़ी हो रही है। उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस सारे बढ़ रहे हैं, कैंसर बहुत बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत कॉमन हो गया आजकल। जो करीब 50 साल पहले इतना कैंसर नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये विष की वजह से, ओज की विकृति हो करके ये सारी बीमारियां हो रही है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास षड रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसमें तिक्त रस है वो विषग्न है। तो अगर हमारे पास ऐसे मरीज भी बहुत सारे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये विष की वजह से बहुत सारी बीमारियां लेकर आ रहे हैं, तो तिक्त रस वाली जो दवाइयां हैं, जैसे कीड़ा तिक्त है, गुड़ुचि है, अमृता षडंग है, वो काफी आरोग्यवर्धिनी भी हम यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे हम परिणाम उससे मिलते हैं हमें, जो तिक्त रस वाली दवाइयां से, क्योंकि विष की वजह से ये सारे रोग हो रहे हैं। तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना आयुर्वेद में हम इस टॉपिक को कहाँ ढूंढ सकते हैं उसके बारे में मैंने इतना बताया। एक बार मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा, खास करके निशांत सर का, कि इन्होंने मुझे, और पवन शर्मा सर का, कि मुझे ये इतना बोलने का एक प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। एक आयुर्वेद में भेषज कल्पना नाम का विषय है, जिस भेषज कल्पना में आयुर्वेद की औषधियों को सेफ्टी से, शेल्फ लाइफ बढ़ाते हुए यूज करने का हमारे घरों में विधान था। जैसे अचार बनाना, आम को 1 साल तक रखना है तो अचार, आपका महेश शर्मा जी बार बार माइक अनम्यूट हो जा रहा है, प्लीज कीप म्यूट। तो एक तो अचार बनाना था। हमारी जड़ी बूटियों के गुण क्वाथ में कुछ घंटे रह पाते थे, इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना आशा वरिष्ठ बन गया। प्रिजर्वेटिव तो पहले थे नहीं, डायरेक्ट आशा वरिष्ठ बना। पानक कल्पना बनी, शक्कर यदि 67% से ज्यादा हो जाएगी तो वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव है। ऐसे ही 7th सेंचुरी में जब रसशास्त्र आया तो रस का भी उद्देश्य वही था कि हमारी चीजों की सेफ्टी हो और उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगे। उसकी एक पूरी की पूरी परंपरा अलग ही बन गई रस रसायन की। और यदि सिंपली देखें तो गुजरात में पारद टिकड़ी आज भी डालते हैं। मैं झंडू में था तो झंडू की पारद टिकड़ी आज भी पोटली में बांध के
अनाज में डाली जाती है कि हमारा अनाज सेफ रहे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अग्निहोत्री सर से प्रार्थना करूंगा उपसंहार की। इन द मीन टाइम आई एम चेंजिंग द लिंक फॉर नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर ऋषभ बोरा जी। आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा। एक तो संभालने का आपको समय नहीं दिया गया क्योंकि लास्ट में आप आए, और लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आपने आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से पूरे शास्त्रोक्त तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि जो कुछ हम खाते हैं वो अगर अष्टो आहार विधि विशेष आयतन के क्रम से बनाया गया है, खाया गया है, तो वो खाद्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है, और नहीं तो जो